Okay, today we can discuss about geomorphic process. अभी इसका तो already we have discussed some of the portions from this geomorphic process. वो geomorphic process का जो भी output है, that is the landforms. वो हम लोग पढ़ा है. We have already discussed whatever the geomorphic features है that हम लोग तो पहले क्लास में सीखा है. Now what is this geomorphic processes and how this forms? इसके बारे में we can discuss from today onwards. पहले we have two kind of geomorphic process है. One is endogenic, another one is exogenic. तो exogenic process से कौन सी तरह का land process हो रहा है वो तो discuss किया है. Next endogenic में दूसरा ये earthquake के बारे में भी पढ़ा है, volcanic के बारे में पढ़ा है. So we will cover the remaining portions. जो process चल रहा है उसके बारे में we will discuss. So this is the first portion that here we will discuss about the endogenic process except volcanoes and earthquake or seismic waves के बारे में वो तो पहले पढ़ा है, इसलिए तो that portion we will avoid and remaining portion we will cover in today's topic. So what is geomorphic process means? It is something related to geomorphology. Geomorphology is the study of landforms and landforming processes. जो भी landforms है and landforming process है, इसके बारे में जो study है, that we will say it as geomorphic processes. It deals with structure of the Earth's surface or Earth's features, the process which is resulting in the construction of that particular structure, and the temporal or the time factor which affect the conversion of a particular feature. वो ये तीनों के बारे में जो study है, that is called geomorphology. So what is geomorphology? It is the study of landforms and landforming processes which deals with structure, process and temporal aspects of landforms. तो landform ये है, तो इसके लिए तो कुछ process चाहिए. तो landform बनाने के लिए we will have certain kind of processes. That is what we are going to discuss today. That is geomorphic processes. So what is this geomorphic processes? The endogenic and exogenic forces causing physical stress and chemical actions on earth materials and brings about changes in the configuration of the surface of the earth. So ये है, as there is two kind of forces है, endogenic forces that comes within the earth interior, जो earth के interior से आ रहा है. दूसरा exogenic force है, वो एक मिनट. तो दूसरा है exogenic forces which occurs from outside Earth's surface में जो forces that we have already discussed like glaciers है, running water है, wind है, ये सब चीज वो Earth surface को mold करेगा. That force we will say it as exogenic forces. So with the help of this endogenic and exogenic forces which creates some sort of stress or action on Earth's materials, and that will bring certain kind of changes in the Earth surface. Earth का जो configuration में ऊपर Earth का जो surface है, उसको ऊपर का जो surface में कुछ तो change बना देगा. That we will say it as geomorphic processes. So what are the major geomorphic processes? So these include the main geomorphic process, that is earth movement, all the earth movements. We will bring that under geomorphic processes. Geo means earth itself, morphology the shape which is related to. So geo earth को जो shape देता है, earth surface को जो shape देता है, उसी process को we will say it as geomorphic processes. So it includes all the earth movement. earth का जो भी movements है, earth के ऊपर नहीं तो अंदर जो भी movements है, that will come under the scope of geomorphic process. So again, geomorphic process has been divided into
endogenetic force and exogenetic force. Endo means from interior of the earth, and exogenic force means from the exterior, external hai. Another one is internal hai. So again, this endogenic force has been divided into two. First one is diastrophism, and second one is catastrophism, sudden movements. One is diastrophism, another one is catastrophism. So within this catastrophism or sudden movements includes the earthquake that we have discussed yesterday and the volcanoes. Earthquake and volcanoes इसमें आ जाएगा. The sudden movement or the catastrophic movement, because when earthquake happens, it will reach the surface within seconds and minutes में ये तो ऊपर आ जाएगा. नहीं तो volcanic eruption होने से that will एक दिन में पूरा एक तो landform ही इसका तो change कर सकता है. उतना स्पीड में ये तो हो रहा है. volcanic eruption तो उतना जल्दी हो रहा है. So that we will categorize under catastrophic movements. That already we have discussed. So second one is diastrophism. That is slow process. Slow process में दो तरीके का landform buildings है, built up है. One is epeirogenic or continental forming. Continental formation इसमें है. Second one is orogenic. We can look each of these in detail. Continental forming, that is epeirogenic. Another one is mountain building, that is orogenic. So diastrophism, slow process, two तरीके का है. One is epeirogenic, another one is orogenic. So epeirogenic में again it is divided into two. One is upward movement and second one is downward movement. एक तो ऊपर आने वाला एक तो मूवमेंट है, दूसरा नीचे जाने का एक मूवमेंट है. Submergence and emergence upward is emergence and downward movement is called submergence. So ये दो तरीके का है. And again orogenic or mountain building process two तरीके का है. One is tension, that is moving away. दो साइड में इसका तो movement होगा, moving away. And second one is compression, दोनों साइड से सामने आएगा. So that is compressional. So orogenic forces has been divided into two, that is tension and compressional activities. Endogenic divided into two, diastrophism and catastrophism. Catastrophic movement is earthquakes and volcanoes. Diastrophism again divided into epeirogenic and orogenic. Epeirogenic divided into two, submergence and emergence, and orogenic divided into tension and compression. At the same way, on the opposite side, there is exogenic force. So exogenic force में कैसा है? It has actually three kind of processes. One is weathering, second one is erosion, third one is erosion and transportation, and third one is deposition. So सब में if you look, यहाँ erosion, transportation and deposition ये process that we have already discussed in the previous classes as well. लेकिन उसका तो ज्यादा प्रोसेस के बारे में ज्यादा नहीं बोला है. जो लैंडफॉर्म इसके रिजल्ट से जो बनाता है इसके बारे में we have discussed. So in endogenic forces, if you look, we have weathering, that is disintegrating a rock mass को, एक बड़ा सा rock mass होगा, इसको तो disintegrate करेगा in different तरीके से. That include physical weathering, chemical weathering and biological weathering. And on the other side, erosional, depositional and transportational process is done by the weathering agents. The इसमें होगा ice or glaciers, then river or the running water, then sea, नहीं ये तो waves and waves, currents ये सब, tides ये सब चीज होगा. Then wind action, that is aeolian, then underground water, that is karst. So इतना सा movement exogenic force में होगा. So in this geomorphic processes, we have to cover the entire area. ये पूरा area को cover करना होगा. Endogenic, exogenic, diastrophism, sudden catastrophism, weathering, erosion, transportation, and deposition. ये सब process comes under the scope of geomorphic processes. Let's see, as we will discuss about the diastrophic movements, comes under the endogenetic force. Endogenetic force के नीचे
जो diastrophic movements आ रहे हैं उसके we will discuss the process of diastrophism today, because in the previous class we have studied about the catastrophe, so we can leave that remaining. We will study today. So endogenetic process, the process which originates from within the earth. Earth, as we know, divided into three: crust, mantle, and the core region. This is again divided, but the process which happens from the interior, जो earth के interior से जो surface layer में आएगा, उसी process को we will say it as endogenetic forces. Endogenetic forces again is being divided into two. One is very slow movement and another one is very fast movement, or very slow process and very fast process. इसमें catastrophic comes under the fast process. Within hours, within seconds, within minutes, ये तो हो जाएगा. Diastrophic process, it is not like the same. ये तो slow process है. Sometimes it will take millions of years. उतना time लगेगा, ये तो output देखने के लिए, मिलने के लिए उतना time इसका तो लगेगा. So catastrophic process includes earthquakes and volcanoes जो suddenly हो रहे हैं. That is catastrophic process. अभी extraterrestrial आने से भी it will comes under the scope of catastrophic processes, but usually we don't count it. Then in diastrophism, there is two kind of processes very important. One is aperogenetic process and orogenic or orogenetic processes. Aperogenetic means a bada huge area like a continental. That why we will say it as continental formation. And orogenic means oro means mountain. So it's a mountain building process. So these are the two kind of movements that happens in diastrophic processes. So endogenetic forces, इसमें aperogenetic movement. Aperogenetic movement that involves uplift, जो एक लैंडफॉर्म ऐसे ऊपर आ जाएगा, अपलिफ्ट करेगा. नहीं तो रैपिंग, इसके मतलब है वो तो ऊपर और नीचे इसका तो मूवमेंट, एयर क्रस्ट का मूवमेंट हो जाएगा. दूसरा अपलिफ्ट तो ऊपर पूरा एक तो लैंडफॉर्म ऊपर आ जाएगा, नहीं तो जो पहले वाला लैंडफॉर्म है वो ऊपर हो जाएगा, नहीं तो नीचे जाएगा. दैट इज वार्पिंग ऑफ लार्ज पार्ट ऑफ द अर्थ क्रस्ट. दिस यू शुड रिमेंबर, इट इंक्लूड्स लार्ज पार्ट ऑफ अर्थ क्रस्ट. छोटा सा नहीं है, बड़ा, एक बड़ा अर्थ का एक तो बड़ा पार्ट तो ऊपर होनी चाहिए, नीचे जाने का. दैट इज कॉल्ड aperogenetic movement. That is why it is also known as continental building processes. अभी ये एक प्लेट है, दिस इज अ प्लेट, दिस इज अ कॉन्टिनेंटल प्लेट. अभी दूसरा एक तो ओशियनिक प्लेट है. तो ये क्या हो गया, ये इधर कंप्रेस हो रहा है या तो कोलाइड हो रहा है, तो इसमें से ये कॉन्टिनेंटल पोर्शन तो नीचे जा रहा है. सो दैट्स कम्स, तो यहाँ सबमर्जेंस हो रहा है. एक कॉन्टिनेंटल का एक तो पोर्शन और ओशियन अर्थ क्रस्ट का एक तो पोर्शन, दैट इज ओशियनिक क्रस्ट, दैट इज डेंसर, इज गोइंग अंडर, इट इज सबमर्जिंग अंडर ए कॉन्टिनेंटल प्लेट. तो ऐसा आ रहा है. सो दैट काइंड ऑफ मूवमेंट it is called aperogenic or aperogenetic movement. emergence भी ऐसा है, ये तो ऐसे आ गया तो ये ऊपर, ये लाइन पर तो ऊपर आ जाएगा, ये नीचे जाएगा, ये तो इसके ऊपर आ जाएगा. so that is an emergence. इसके ऊपर एक तो emergence आ रहा है. that is the continental building process. ये है emergence and submergence. then the second one is orogenic. Oro means mountain and mountain building process. It is also slow movements of lithospheric plate है. It is horizontal earth movement. It is mountain. It is also known as mountain building process. तो ऐसा है, दो कोलाइड होगा तो क्या होगा, यहाँ डिस्ट्रक्शन ये ऊपर जाएगा, लेकिन यहाँ तो ऐसा वाले इरेगुलरिटीज हो जाएगा छोटा सा.
तो दैट इज कॉल्ड फोल्ड माउंट। है तो इधर बेंड होने से देयर इज फोल्डिंग, है तो इधर फोल्ड हो जाएगा एंड दिस विल कम्स दिस विल मेक ए फोल्ड माउंटेन। सो फोल्डिंग हो जाएगा। अभी एक तो एक साइड में जा रहा है, दूसरा दूसरे साइड में जाएगा। सो दिस विल इंक्रीज द टेंशन। तो जैसे रबर बैंड है ना, उसको तो दो साइड में ज्यादा पुल करने से वो ब्रेक हो जाएगा। जैसे यहाँ पे ये सेंटर पोर्शन में, यस हेलो जी। कुछ प्रॉब्लम है? नो सर। ओह तब आपका माइक ऑन हो गया है इसलिए। तो ये है नो सर, तो सेंटर में और एक स्टूडेंट आया है इसलिए सर। ओहो मेरे ओके। तो ये एक साइड में गया है तो ये दूसरे साइड में गया है, तो दैट विल क्रिएट टेंशन। तो इसके बीच में जो पोर्शन है दैट इज कॉल्ड फॉल्ट लाइन। ये तो फॉल्ट लाइन है, इसके बीच में एक तो क्रैक हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड फॉल्टिंग। So faulting of rock and folding of rock is the result of orogenic process. Rocks under stress force drop with accompanying displacement। ये तो डिस्प्लेसमेंट होगा। तो ये एक तो रॉक है, बड़ा रॉक भी सोचो, तो एक साइड में यहाँ पुल हो रहा है और एक साइड में दूसरा पुल हो रहा है, तो बीच में एक क्रैक बन जाएगा। दैट इज कॉल्ड फॉल्टिंग। एंड फोल्डिंग ऐसा है, दो ऐसा रॉक, बड़ा रॉक मास और प्लेट है ना, वो प्लेट सामने आने से इट विल बेंड बिकॉज ऑफ कंप्रेशन, इट विल बेंड हो जाएगा एंड दैट इज कॉल्ड ए फोल्ड। लैटरल कंप्रेशन ऑफ सरफेस रिजल्ट इन फोल्डिंग। अभी कोई भी चीज हो, अभी दो कार सोचो, दो कार ऐसे आ रहे, तो ये तो कोलाइड हो गया, तो क्या होगा, एक तो ऊपर ऐसे जाएगा और यहाँ पे सब कोलाइड, कुछ पोर्शन तो खराब हो जाएगा लेकिन कुछ पोर्शन ऐसे आगे पीछे ऐसे हो जाएगा। सो दैट काइंड ऑफ मूवमेंट वी विल से इट एज फोल्डिंग। सो इन एंडोजेनिक फोर्सेस, one is continental building process, another one is mountain building processes. And at the same way, here I said submergence and emergence हो रहा है, and there is another process called warping। इसके ऊपर हम बोल दिया था, ये ऐसा है, you should understand this concept, that is isostasy। Isostasis का basic concept ऐसा है, bigger the column, lesser the density, and smaller the column, greater the density। Same way, bigger the landmass, lesser the density, and smaller the landmass, greater the density। Like अभी mountain, एक तो mountain है, that is very bigger, उसका तो size big है। So a mountain has less density compared to, अभी सामने एक तो plain region है, ज्यादा ऊपर नहीं गया है, उसका तो ऐसे वाला जगह that is small in size, and that area there will be high density। Based on this, the gravitational attraction of the earth center, earth interior से जो gravitational attraction है, and opposite side में buoyancy है, that we have already discussed। lithosphere is floating on, asthenosphere में float हो रहा है, तो ये floating है। फ्लोटिंग करते समय वो नीचे से एक तो फोर्स ऊपर पुश करेगा, दैट द वाटर, अभी वाटर है तो कुछ वेटलेस चीज उसके ऊपर डालने से इट विल नॉट मूव डाउन, डायरेक्टली ऐसा नहीं मूव होगा, वो तो ऊपर पुश करेगा। अभी हम लोग भी पॉन्ड में गया तो क्या होगा, एक दो बार तो हम तो खुद से ऊपर आ जाएगा, द वाटर विल एक्सर्ट अ प्रेशर ऑन अस, तो ऊपर उड़ाने की कोशिश करेगा, that force is called buoyancy। So this isostasy is the same, एक साइड से नीचे से ऊपर उठाने का कोशिश है because of this buoyancy, and दूसरे साइड से ऊपर से नीचे आने का एक तो फोर्स है, that is gravity। ये gravitational force and buoyancy के बीच में एक तो बैलेंस है, that kind of balance we will say it as isostasy। isostasy।
So isostasis is the rising or settling of portions of the Earth's lithosphere that occurs when the weight is removed or added in order to maintain equilibrium between the buoyancy force that pushes the lithosphere upward. That is, this is buoyancy which pushes the lithosphere upward, and gravitational force that pulls the lithosphere डाउनवर्ड. डाउनवर्ड लेने के लिए अभी ग्रेविटेशन हमको पता है, जो भी चीज ऊपर उड़ाने से वो तो नीचे, gravitational force. Like the same here also, because of the gravitational force there is a tendency of the lithosphere to come down. ऐसे नीचे आने का एक तो टेंडेंसी है. तो उल्टा इसका ऑपोजिट साइड में करेगा buoyancy, वो नीचे का चीज को ऊपर उड़ाने का कोशिश करेगा. So it is a balance. It is trying to make an equilibrium or balance between the buoyancy and the gravitational force. If you look at this picture, if you can see, if the column is small, तो कॉलम स्मॉल है, इसका डेंसिटी ज्यादा है, तो इट कैन बैलेंस. इतना सा ऊपर आएगा, इतना नीचे आने से भी इट कैन बैलेंस. बट एट द सेम टाइम यह तो बड़ा वाला एक कॉलम है, तो इसका तो इतना नीचे जाने से इसको तो बैलेंस कर सकेगा. तो ऊपर इतना सा होगा, नीचे इतना जाना है. अभी एक पानी में आप एक वुडन पीस को डाल देगा तो थोड़ा सा इसमें ऊपर आ जाएगा, बाकी नीचे जाएगा, बिकॉज इसका तो डेंसिटी वाटर से कम डेंसिटी है, इसलिए तो वो ऊपर आ रहा है. अभी वाटर से ज्यादा डेंसिटी है तो वो तो पानी में घुसेगा. अभी एक कॉइन डालने से it will slowly settle at the bottom of the water. ऐसा. लेकिन instead if we are putting some water log, एक wooden log को इसके अंदर डाल दिया वाटर में, तो what is the result? It will float because of this buoyancy. इसका buoyancy, वो wooden log का density कम है, so there will be this, because of this buoyancy it will float. Okay, रहेगा. So that kind of tendency is called isostasis. Same way, if you look here, this is the crust. ये तो mountainous area है. Mountainous areas को इतना सा बड़ा रूट होगा नीचे तक, लेकिन ये तो प्लेन एरिया है. प्लेन एरिया का बहुत कम रूट होगा. अभी वाटर बॉडी और ओशनिक क्रस्ट है तो इसका वो कम, इसका तो फूटिंग होगा. तो इतना रूट इसमें जाएगा, बिकॉज ये तो इसका डेंसिटी कम है. सो ऐसा ऊपर आने के लिए तो इतना नीचे तक जाना ही होगा. सो दिस इज द कांसेप्ट ऑफ आइसोस्टेसिस. यहाँ bigger the column, lesser the density. Like bigger the land mass, lesser the density. Smaller the column, greater the density. That means smaller the land mass, greater the density. You have to remember this. So for maintaining an equilibrium between the buoyancy force and the gravitational force, there is some kind of isostasis maintaining between the crustal parts. Then comes, abhi we can go for orogenic forces. So emergence and submergence happens like this. अभी सोचो यहाँ पे हम बोल दिया है सबमर्जेंस हो रहा है, तो यहाँ मोल्टन मटेरियल ज्यादा हो गया है, तो इसको तो ये जो नीचे आ रहा है इसको तो फिर ऊपर जाना होगा. तो ये दूसरे कई से ये तो ऊपर आ जाएगा. लाइक समटाइम्स क्रैक होने से वोल्केनिक वो उसी साइड से वो तो ऊपर आ जाएगा. नहीं ये तो कुछ फॉल्ट का लाइन होगा, लाइक प्लेट बाउंड्री जोन से वो तो ऊपर आ जाएगा. सी फॉर स्प्रेडिंग ये सब कल और परसों डिस्कस किया है. वो ऐसे मैग्मा तो ऊपर आ जाएगा. So there forms a landform. That kind of landform is that ऐसा upliftment होगा, that is emergence. And जो नीचे जा रहे हैं that is submergence. That is a epirogenetic movements. And the second movement is that is usually happens in faulting. Faulting का भी different type of faulting है, but that we can discuss. So नेक्स्ट वन इज फोल्डिंग. ये ओरोजेनिक फोर्स में माउंटेन बिल्डिंग प्रोसेस है. माउंटेन बिल्डिंग प्रोसेस के लिए दो तरीका का है, फॉल्टिंग एंड फोल्डिंग.
So what is this faulting? Faulting में ऐसा है, ये प्लेट तो इधर जाएगा, नहीं तो एक लैंड रॉक, बड़ा रॉक का एक मास होगा, वो एक साइड में इधर एक पुल तो इधर होगा, दूसरा पुल इस साइड में होगा, तो बीच में इसका टेंशन ज्यादा होगा। टेंशन जैसे रबर बैंड हम लोग पुल कर रहे हैं ना, ऐसे इसका टेंशन ज्यादा होगा एंड बीच में ये तो क्रैक बन जाएगा। That is called faulting. Actually, this line is called fault lines. A fracture in the crustal rock where the rocks are displayed along the parallel. है तो because of this pull, ऐसा stress है तो एक साइड में जाएगा, दूसरा साइड में जाएगा, तो there will be some sort of cracks. इसके बीच में एक तो crack बन जाएगा। That is called a fault. The plane which the rock blocks are displaced is called fault plane. तो ये तो याद रखना है, ये term fault plane. तो this is the line. ये तो इस line में, ये plane area में ये तो crack हुआ है. So that area, this line, usually say it as fault plane. It may be ऐसा vertical हो सकता है, it may be inclined हो सकता है, it may be horizontal हो सकता है, it may be curved भी हो सकता है। This fault plane. तो ऐसा है, जो plane है, एक यहाँ एक this is a rock mass and this is a rock mass, अभी ये दोनों साइड में जा रहा है, तो बीच में इसका स्ट्रेस ज्यादा होगा, तो ये टूट जाएगा, टूट जाने से ये जो लाइन है, for that line we will say it as fault plane, and जो एक साइड में we will say ये this fault plane में भी vertical होगा, incline होगा, horizontal होगा और curved होगा। Then what are the major type of fault? तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो mainly there is three kind of faults. One is normal fault, second one is reverse fault, and third one is lateral or strike slip fault. If you look here, if you look at this picture, ऐसा है, पूरा एक लैंड मास ऐसा था, ऐसा एक लैंड मास था, लेकिन क्या हुआ, यहाँ से ऐसा वाला एक क्रैक बन गया है, फिर ये जो लैंड मास है वो नीचे गया, ये तो नीचे गया इस लैंड मास। तो पहले ये लाइन इधर तो गया, तो ऐसे जाता था मैं, ये अभी सोचो यहाँ एक केव था, यहाँ एक केव है, ऐसे इसमें एक केव है, तो क्या होगा, केव का रूफ इस साइड में आ जाएगा एंड इसका फुट तो इस साइड में आ जाएगा। एक केव होने से ये रूफ है ना, ये रूफ तो ऊपर आ जाएगा और ये पोर्शन में आ जाएगा और ये फुट इसी पोर्शन में आ जाएगा। तो ये पोर्शन में जो हम पे इसका हैंग कर सकता है, जैसे ऐसा होगा इसका, तो ये तो ओपनिंग इस साइड में, सो कुछ तो हैंग कर सकता है इसके ऊपर, सो दैट साइड वी विल से इट एज हैंगिंग वॉल, एंड जहां पे हमको फुट रख सकता है, दैट इज कॉल्ड फुट वॉल, दिस एरिया इज कॉल्ड फुट वॉल। एंड जहां पे वो नीचे जाएगा उसी साइड में, इफ यू लुक हियर, इसका स्लैंडिंग स्लोप ऐसा है, इसका ऊपर वाला एरिया यहाँ आ जाएगा और नीचे वाला एरिया इस लाइन में आ जाएगा, इस वॉल में आ जाएगा, ऊपर वाला एरिया इस लाइन में, इस वॉल में आ जाएगा। जो वॉल में वो टॉप पोर्शन आएगा वो हैंगिंग वॉल होगा, जो पोर्शन में नीचे का ये लाइन है ना, फुट होगा, दैट इज कॉल्ड फुट वॉल। सो यू हैव टू रिमेंबर दिस स्टेटमेंट। एंड अनदर वन इज कॉल्ड स्ट्राइक स्लिप, वो तो हम दिखा देगा। अभी कुछ चीज, इसका तो मूवमेंट तीन तरीके से होगा, ये स्ट्राइक, ये फॉल्टिंग का मूवमेंट तीन तरीके से होगा। एक तो असली में नॉर्मल फॉल्ट होगा, जहां पे ये
हैंगिंग वॉल नीचे जाएगा, हैंगिंग वॉल अभी यहाँ बनाने से इफ यू लुक इट विल बी लाइक दिस, ऐसा होगा, ये ऊपर वाला ये दिस इज हैंगिंग वॉल एंड दिस इज फुट वॉल, ये तो फुट इधर होगा टॉप इधर होगा, तो दिस काइंड ऑफ जो जब ये हैंगिंग वॉल नीचे जाएगा दैट इज कॉल्ड नॉर्मल फॉल्टिंग। दूसरा अभी देखो उल्टा होगा, यहाँ क्या है फुट वॉल इधर है एंड ओपनिंग तो इसका हेड तो इधर आ जाएगा, तो हैंगिंग वॉल ये है एंड फुट तो यहाँ है, तो यहाँ क्या हो गया ये फुटबॉल तो नीचे गया है, सो दैट काइंड ऑफ फॉल्टिंग इज कॉल्ड रिवर्स फॉल्टिंग। एक तो हो गया हैंगिंग बॉल नीचे गया एंड फुटबॉल उधर ही बैठा है, दैट इज कॉल्ड नॉर्मल फॉल्टिंग। इफ द फुटबॉल इज मूविंग डाउन, अदरवाइज ये हैंगिंग बॉल ऊपर आएगा, then we will say it as reverse faulting. And if they are slide past each other, ऐसे एक तो इस साइड में जा रहा है दूसरा इस साइड में आएगा, तो इसे बोलेगा strike slip fault, strike slip fault. So these are the three kind of faulting. एक हो गया हैंगिंग बॉल नीचे गया एंड फुटबॉल ऊपर आ गया, दैट इज कॉल्ड नॉर्मल फॉल्ट। ये भी पूछ सकता है when the hanging ball is down and the football is up, what kind of fault is that? That is normal fault. And if the hanging ball is up and the football is down, then what kind of fault is that? That is reverse fault. And if both the fault is moving in a parallel manner, then that kind of fault we will say it as स्ट्राइक स्लिप फाल्ट। अभी स्ट्राइक स्लिप फाल्ट बोलेगा, ये जो पोर्शन है दिस इज स्ट्राइक। आई विल शो यू हियर, यहाँ ये जो हो गया है तो यहाँ से यहाँ तक ये पोर्शन you will say ऐसे डायरेक्शन में we will say it as this is called strike, S-T-R-I-K-E, strike। एंड उल्टा यहाँ से नीचे जाए ये डायरेक्शन को we will say it as dip, strike and dip। तो जो पैरेलल है इसका वो ये लाइन आप देख सकते हैं और ये लाइन आपको दे सकते हैं, वो ये डायरेक्शन को we will say it as strike। एंड जो ऊपर से नीचे का ये डायरेक्शन है दैट वी विल से डिप, डिप लाइन एंड फॉल्ट लाइन, स्ट्राइक लाइन। सो इफ इट इज मूविंग, एक ऐसा हो रहा है और दूसरा ऐसा हो रहा है, देन वी विल से इट एज स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट और लैटरल मूवमेंट। मेजर टाइप ऑफ फॉल्टिंग, वन इज नॉर्मल फॉल्ट, डिस्प्लेसमेंट ऑफ टू रॉक इन ऑपोजिट डायरेक्शन, इसमें हैंगिंग बॉल नीचे होगा फुटबॉल ऊपर होगा, दिस वन लाइक दिस वन। एंड इफ द हैंगिंग बॉल तो ऊपर है एंड फुटबॉल नीचे है, देन वी विल से इट एज रिवर्स फॉल्ट। एंड इफ इट इज लैटरली, वन तो ऐसा मूव हो रहा है दूसरा ऐसे मूव हो रहा है, देन वी विल से इट एज स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट और लैटरल फॉल्ट। So these are the major type of faulting. Along with that, we have different types of faulting and different type of faulting, and it is named as rift valley. This is the another different type of faulting. Different type नहीं है, ये तो continuous ये fault, ये तो फॉल्ट हो गया, फिर तीसरा फॉल्ट हो गया, ऐसे बनाने से फॉर दैट वी विल से इट एज रिफ्ट वैली। जो दिस इज द स्ट्राइक, यहाँ स्ट्राइक लाइन है, यहाँ दिस इज द डिप लाइन एंड दिस इज एक्चुअली यहाँ देखने से फुट हिल्स एंड दिस इज द हैंगिंग वॉल। सो फुट वॉल, दिस इज द हैंगिंग वॉल, again this is the football, this is hanging ball, and again this is football।
तो ऐसा कंटिन्यूअस चेन होगा, तो इसके बीच में जो वैली बनता है दैट वी विल यूजुअली से इट एज रिफ्ट वैली. रिफ्ट वैलीज आर फॉर्म्ड ड्यू टू, ऐसा एक क्वेश्चन पूछ सकता है, रिफ्ट वैलीज आर फॉर्म्ड ड्यू टू फॉल्टिंग, ये तो लिखना होगा. एंड दिस रिफ्ट वैली यूजुअली वी विल से इट एज graben. Another name for Rift Valley is called graben. It's a German term, means depression. Depression, जो भी depression area है, ये जो जगह है, that we will say it as graben. The Rift Valley, which is formed due to faulting, is called graben. And जो upper portion, ये जो portion है, the upward portion है, that we will say it as host. So Rift Valley represent a trough or depression or basin between two crustal parts, and trough is raised fault block bounded by normal fault. That is host. ये host and graben usually found, ये तो साथ में होगा, host and graben. So continuous chain, we will say these are rift valleys. ये सब valley. So these are the major type of things. One is normal, second one is reverse fault, then strike slip fault or lateral fault. ये based on the अभी foot hills देखने से, foot hills and hanging hills देखने से आपको समझ में आएगा. जब foot hills ऊपर है that is normal, foot hill ऊपर normal, foot hill नीचे reverse, and when it is slide past then it is called strike slip fault. Strike means slip हो गया है. Strike हम बोल दिया है, what is the strike? This direction, यहाँ का ये जो end है और दूसरा ये hand है, that is called strike direction, and जो नीचे का ये direction है that is dip direction. And the gap between, अभी एक तो single landform था, तो ये top, this is one top and this is one top. इसमें क्या हो गया, ये नीचे गया है, ये टॉप नीचे गया है एंड ये टॉप ऊपर है, तो इन दोनों के बीच का ये स्लोप है, दैट इज कॉल्ड फॉल्ट स्कार्प. दिस इज कॉल्ड फॉल्ट स्कार्प. ये तो ऐसा है जस्ट लाइक ए क्लिफ, क्लिफ है ना ऐसा स्ट्रेट, दिस इज ऐसा एक लैंड मास है, यहाँ से डायरेक्ट वर्टिकली एक तो इंक्लिनेशन है, दैट इज वी विल यूजुअली से इट एज क्लिफ. तो ऐसा वाला एक तो almost like a cliff, थोड़ा सा स्लैंडिंग होगा, ऐसा वाला इसको we will say it as fault scarp. ऐसा स्लैंडिंग भी होगा, ऐसा भी होने से भी we will say it as scarp when it is happened, when it is created due to faulting, that is called fault scarp. So these are the major type of faultings. ये भी याद रखना है, graben and host भी पूछ सकता है क्वेश्चन में. तो graben is the lower, ये जो नीचे का डिप्रेशन है that is called graben, and जो ऊपर का ये पोर्शन है that is called host. Host and graben. Then comes another one, that is folding. Wave like bend formed in the crustal rock due to the tangential compressive force resulting from horizontal movement, caused by endogenic forces originating deeper within the earth. ऐसा है, जो नीचे का जो फोर्स है, वो प्लेट मूवमेंट हम बोल दिया, ये दोनों साइड से ये तो कोलाइड होगा, तो यहाँ का जो रॉक पीसेस है वो तो बेंड होगा, ऊपर नीचे है, तो ऐसा बेंड होगा. तो यहाँ फोल्डिंग, एक फोल्ड हो गया, दूसरा फोल्ड हो गया, तीसरा फोल्ड हो गया, ऐसा जस्ट लाइक द सेम. वो जहाँ पे वो bend को we will usually see it as folding. Different kinds of folding, maybe it in anticline, syncline, then monocline, and these are the main folding, but it consists of
and synclinuria. ऐसा भी false है. These are the major faults: anticline, syncline, monocline, anticlinuria and synclinuria. तो anticlines क्या है? अभी एक तो ये straight है, तो यहाँ ऐसा वाला एक bend होने से this you will say it as anticline. This is called anticline. Anticline is a fault that is convex, अभी convex shape में out, and has its oldest bed at its core region. वो center region में इसका oldest bed होगा. I will show you the picture like a rainbow. तो ऐसा rainbow जैसा इसका shape होगा. That is called anticline. जो ऊपर से ऐसा convex shape होगा इसका, तो ऐसा. And syncline is a fold with younger layer plus वो younger layer होगा center में, and it will be like this. यहाँ से ऐसा जाने से ऐसा डिप्रेशन जैसा ऐसा होगा इसका पैटर्न. So it is like a concave shape जैसा है, and the young layer तो आएगा center में like a U. That is the. Then another one is monocline. It's a special type of fault in which both the limbs are parallel but offset to each other. Monoclines means ऐसा है, तो इसमें हम स्टेटमेंट बोल दिया limbs. Limbs ऐसा है, if you look here, ऐसा एक तो fold है, तो ये जो साइड है, ये दोनों साइड है, this side we will say usually as limbs, like a leg. तो दो legs है ना, इसे like the same we will call limbs. जो limbs है that is usually parallel है but offset. That means ये तो ऐसा हो गया, इसका bend हो गया, फिर ये तो जाएगा, तो ये तो ऐसा extend करने से it will look parallel. ये limb है, ये भी limb है, ये दोनों पैरेलल है बट ऑफसेट से बेंड तो यहाँ होकर, तो दिस इज मोनो सिंगल बेंड इसमें होगा. नॉट लाइक यहाँ तो दो है, यहाँ भी बेंड, यहाँ भी बेंड है, तो ऐसा नहीं है, यहाँ एक ही बेंड होगा. दैट इज कॉल्ड मोनोक्लाइनर folding. So these are the major type of folding: anticline, syncline and monocline. Let's look at this. So ये है proper ऐसा shape हो गया like a. Just remember anticline A. तो anticline का ऐसा shape है. इसमें देखो just one comes at the center. ये सब नया है, ये तो this is the youngest one, this is the youngest one. तो oldest portion है वो सेंटर में आ जाएगा. That is called anticline. If you look here, can be different bends here. 1, 2, 3 ऐसा ये रॉ पूरा बढ़ चुका है. It's called anticline fold. Then comes the syncline. If you look here, the youngest one at the center. ये center portion में आएगा youngest one. इसका bending देखो ये. तो this is called syncline. So you look, can see the bend here. 1, 2, 3 ये का youngest आ जाएगा. तो देखो नीचे से जो भी आ रहा है वो सबसे बाहर है, वो सबसे सेंटर में आएगा. एंड द मोनोक्लाइन, तो देखो ऐसा आ रहा है, यहाँ बेंड हो रहा है और इसका पैरेलल फिर जाएगा. लाइक द सेम, दिस इज द लाइन, पैरेलल लाइन है, तो यहाँ बेंड होकर ये भी ये लाइन के पैरेलल इसका मूवमेंट होगा. मोनोक्लाइन सिंगल है. एंड दिस ये जो पोर्शन है, these are इसका जो लिम्स है, यहाँ भी देखने से ये इसका लिम्ब है, ये इसका लिम्ब है, like a leg. So major anticline, syncline and monocline. Then fold is also divided based on angles. So what are they? It includes symmetrical fold, asymmetrical fold, overturned fold, recumbent fold. ऐसा है, if you look
सिमेट्रिकल, तो कुछ सिमेट्री है, ऐसा हो गया है, फिर ये ओके ऐसा, तो सेम डायरेक्शन इसका तो फोल्ड है, दैट मीन इट हैज सेम एंगल, स्ट्रेट ऐसे एंगल में इसका नहीं, ये तो अभी ये सोचो ऐसा है, ये ऐसा होगा इसका फोल्ड, सो दैट काइंड ऑफ सेम एंगल में इसका फोल्ड है, तो दैट यू से सिमेट्रिकल फोल्ड। तो असिमेट्रिकल क्या होगा, ये फोल्ड ऐसा हो गया एंड दूसरा फोल्ड ऐसा हो गया, तो ये इस लाइन में है तो दूसरा इसी एंगल पे है, सो दैट काइंड ऑफ फोल्ड इज कॉल्ड असिमेट्रिकल, और सिमेट्री नहीं है, सिमेट्रिकल है तो सेम एंगल में हो जाएगा। देन फोल्ड यू चाहिए, तो ओवरटर्न क्या होगा, इसका तो टर्न होकर बेंड तो हमेशा चाहिए, that kind of fold is known as overturn, both the leaves in same direction, but one has been tilted beyond vertical, vertical ऐसा था, ये तो vertical ऐसा था, ये तो दोनों सेम डायरेक्शन में है ये दोनों लिम्स, लेकिन वर्टिकल डायरेक्शन से यह तो ज्यादा होकर इसका तो ओवरटर्न होकर ऐसा शेप में आ गया है, that kind of fold we will say it as overturned fold. And another one is recumbent. These are folds that are more nearly horizontal folds, and recumbent fold means laying down. If you look at this picture, ये तो ऐसा है, this is the floor and ये तो recumbent fold ऐसा आ गया है, almost horizontal है इसका shape. So that kind of fold we will say it as recumbent fold, nearly horizontal to the plane. This is the plane area, this is recumbent fold. So these are the major fold. So fold में if you look, तो ऐसा आएगा तो this is anticline, इसका दूसरा साइड है this is syncline, एंगल स्ट्रेट में है तो सिमेट्री होगा, इसमें से ये तो चेंज होकर इसी एंगल में आ गया है, दैट इज असिमेट्री हो गया, तो फोल्ड और बेंड ज्यादा हो गया है, दैट इज ओवरफोल्ड, and if the fold is almost parallel to the surface, it is known as the recumbent fold. And finally there is one more statement, ये भी पूछ सकता है, napple or naps, napple और naps, this is actually a recumbent fold है, लेकिन ये टूट जाएगा, इसका तो ये जो एरिया है ना यहाँ से ज्यादा कंप्रेशन, ये तो ऐसा बेंड होते हैं, इसमें प्रेशर ज्यादा होने से यहाँ से टूट जाएगा, ऐसा इसका तो टूट जाएगा और रिमेनिंग पोर्शन यहाँ आ जाएगा और ये तो ऐसे टूट के दो पीस बन जाएगा। इफ द रिकम्बेंट फोर्स ऐसा ब्रेक होकर एक पोर्शन दूर में जाएगा, इतना दूर है, दूसरा पोर्शन यहाँ है, तो ऐसा वाला फोल्ड को, फोल्ड नहीं है एक्चुअली, ये तो ब्रेक हो चुका है, दैट काइंड ऑफ फोल्ड इज कॉल्ड नीप, that is called nape. So napes are formed due to the complex folding mechanism caused by horizontal movement and resultant compressive force. So compressive force उतना ज्यादा होगा तो क्या होगा, फर्स्ट ये दिस विल कन्वर्ट टू रिकम्बेंट फोल्ड, ये तो इंक्लाइन हो चुकेगा, उसके बाद ये तो धरती के पैरेलल हो जाएगा, फोल्ड तो ऐसे जाएगा, ब्रेक होगा तो क्या होगा, इधर एक तो होगा और रिमेनिंग पोर्शन विल कम एट दिस पॉइंट, यहाँ से एक तो ये तो ब्रेक होगा, so that is called a nape. Due to very high pressure, one limb of the recumbent fold slides forward and override the other fold, इसके ऊपर ये तो आ जाएगा। The plane so formed is called pressed plane, ये तो जो plane है, this plane is called actually plane है, and this process is called truss, ये तो याद रखना है। Due to the continuous pressure, the overridden ये तो broken हो जाएगा and it will move several, ये तो different देखने से several kilometer ये तो move जाएगा इसका, that kind of folding is called napes, ये तो याद रखना है। Recumbent fold को अगर टूट जाएगा तो ब्रेक हो गया, कुछ स्टेटमेंट
देखने से you directly write it as NIPS. दोनों पूछ सकते हैं. And finally the fold is, and finally there is another kind of folding, that is anticlinorium and synclinorium. क्वेश्चन ये है, एंटीक्लाइन ऊपर है, सिंक्लाइन नीचे है. तो बिकॉज ऑफ द सेम इफ यू लुक, ये एंटीक्लाइन इसमें ये तो बड़ा पीस होगा, इसके अंदर बहुत कुछ ऐसा वाला सिंक्लाइन एंटीक्लाइन होगा. तो ऐसा will say it as anticlinorium. There will be multiple anticline and syncline in a single anticline. एक बड़ा एंटीक्लाइन है, वो एंटीक्लाइन शेप में इसके अंदर ही बर्थ एंटीक्लाइन एंड सिंक्लाइन आ जाएगा. देन इट इज कॉल्ड एंटीक्लाइनोरियम. एंड ऐसे उल्टा इसमें ये तो उल्टा होकर ऐसे आ जाएगा. तो इसमें दिस इज एक्चुअली ए सिंक्लाइन. तो ऐसा वाला शेप में इसमें बहुत कुछ एंटीक्लाइन एंड सिंक्लाइन आने से दिस विल वी विल से इट अ सिंक्लाइनोरियम. लाइक द सेम इफ यू लुक हियर, this is syncline and this is anticline. तो इसमें birth आने से यहाँ से यहाँ तक we will say it as anticline, and यहाँ से यहाँ तक we will say it as syncline. So that's it, folding and faulting. तो बाकी तो अभी एक्सोजेनेटिक फोर्स का होगा, that we can discuss tomorrow. तो ये तो पूरा पोर्शन कवर जो सर आपका वॉइस क्लियर नहीं आ रहा है. मेरा वॉइस नहीं हो गया. अभी एंटीक्लाइन सिंक्लाइन तक है. इसमें कुछ डाउट है? नो सर. तो ये हम शेयर करेगा. आज के लिए स्टॉप करेंगे. जी जी, ओके सर. थैंक यू सर. गुड नाइट सर. ओके.